First thing, they are vulgar tales. What is radical feminism? The basic idea of radical feminism is that they say we do not need man. Students के papers को थोड़ा बहुत edit करके अपने नाम से publish कर लिया. मुझे समझ में आ गया, reality यही है. बाद में उसने मुझे बताया कि सर उसने बात की. Earlier they were asking some 70,000, 50,000 तक फाइनल हुआ and she got 2 papers. लोग बैठे हैं, टीचर्स पेपर लिख देंगे आपके लिए. बैक डेट में एंट्री होती है PhD में. गुड नेम गीतिका. गीतिका का जो क्वेश्चन था ना, व्हाट इज क्वाइट टेल, अगेन दोबारा देख लो. Quiet tale के example, it comes in Chaucer's works. Quiet tale is when you tell a story and ask a question, raise a question, but then that question gets answered by somebody who answers you. It means somebody kept you quiet. किसी ने आपको चुप करा दिया. So quiet tale के examples आते हैं यहाँ पे. Wife of Bath का क्या concept था? Wife of Bath ने क्या पूछा था? What was the question raised by Wife of Bath? What is the need of chastity? So technically she raised a question. Who answered Wife of Bath? The student of Oxford, the clerk of Oxford. And when he answers, because that woman, patient Griselda, she is taken to heaven at the end of the story, that she is the most pure woman, pious woman, dedicated woman. So he gives the answer that if this is the need of chastity, this is the need of loyalty, you will go to heaven. So message देता है वो कि have I answered all? मिल गया जवाब सबको. Without taking the name, but he has answered. Do we have more examples of quiet tale? Yes. Reeve and Miller. Mention this. Make them the next people, next storytellers. The stories are not important, but some points are important. First thing, they are vulgar tales. A woman is not born. Women is not born but becomes. It's a feminist writer. कल का रेफरेंस है, कल का क्वेश्चन था ये. फ्रेंच रेडिकल फेमिनिस्ट राइटर सिमोन डी बिवायर रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर आती है. व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म? एक्चुअली द पार्ट ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म, वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म. द बेसिक आइडिया ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म इज दैट दे से वी डू नॉट नीड मैन. फेमिनिज्म अपने यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी. तो थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या कहता है? आप इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनिज्म बोल सकते हो, ओवर स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनिज्म बोल सकते हो. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फेमिनिज्म एंड स्यूडो फेमिनिज्म. मैं भी बोलने से डरता हूं, ज्यादा बात करने से डरता हूं मैं, कि कहीं कोई एग्रेसिवली वापस ना जाए मेरे पास. We will disobey man is pseudo feminism. I have seen sometimes in my classes, कई बार DU के स्टूडेंट्स ने मुझे मुंह पे रिप्लाई करा, so father is also representing patriarchy, I'll say no to my father. ऐसा नहीं है. इसका मतलब बेटा भी बाप की ना सुने. बेटा बोले मैं भी मैनिज्म में चल रहा हूँ, कोई फेमिनिज्म में है मैं. फिर father is not just a father and patriarchy वाला thing, he is also a protector. पापा जो कुछ कहते हैं वो जरूरी नहीं है ना हमेशा वुमेन को दबाने के लिए बोलते हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बोलते हैं. अभी सपोज करो आप कुएं में कूदने जा रहे हो और फादर से नो प्लीज, अभी थोड़ी बोलोगे सी दिस इज द हिस्ट्री, मेन हैव ऑलवेज स्टॉप्ड अस. वो आपको फादर लव्स यू. तो ये बहुत हल्का सा डिफरेंस है फेमिनिज्म एंड स्यूडो फेमिनिज्म. दीज पीपल रेडिकल फेमिनिस्ट दे वर स्ट्रांगली डिस्कवरिंग द आइडिया ऑफ वुमन. उन्होंने बोला पहले वुमन बताओ क्या होती है, वुमन बनाया किसने, व्हाट इज अ वुमन? बैट. मैंने एक दो और भी जैसे देखी है डॉक्यूमेंट्री. मैं सोचा भी था मैं इंडियन वर्जन बनाऊंगा पर टाइम नहीं मिला. वैसे वुमन किसको बोलते हैं? एक डायमंड का कुछ ऐड आया था इसमें वो लड़की जो है वो हस्बैंड से ज्यादा कमाती है पैसे, तो उसको वो आके बोलता सो यू आर द मैन इन द हाउस. ही सेड नो आई एम द वुमन इन द हाउस. बट एग्जैक्टली व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर दिस वर्ड वुमेन, स्त्री, नारी? व्हाट? Gender or gender roles? So gender doesn't define you, right? That's what Simone de Beauvoir says in Second Sex. A woman is not born, she becomes. एक छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता मैं लड़की हूं जन्म के समय, उसे बताया जाता है, सोसाइटी बताती है. And then society makes her behave accordingly.
ज्यादा ऊंचा मत बोलो, ठीक से बैठो, ड्रेस को ठीक से कैरी करो. Gradually she understands that this is me, these are the obligations, do's and don'ts, and then she becomes a woman. So these third wave feminists, they started questioning this idea of women. तो और भी हैं, ये तो एक है Simone de Beauvoir. Shulamit Firestone, one of the most aggressive feminists, he said that first of all, say no to marriage. If you want to have your free identity, independent identity, say no to marriage. क्योंकि शादी करोगे तो गुलामी करनी ही पड़ेगी, सोसाइटी बनी ही ऐसी है. It's the thing, is we have different religions, right? But in 99% religion, women has to leave her house after marriage. This is dislocation of culture. होमी भाभा के रेफरेंस में, अगर लड़का शादी करके लड़की के घर पे जाएगा, साइकोलॉजिकली कौन कॉन्फिडेंट है, ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन है? अगर लड़का लड़की के घर पे रहना शुरू कर दे, घर जमाई बन के, तो उस रिलेशनशिप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? लड़की. सेम थिंग इज विद बॉय. जब लड़की इधर आ जाती है तो लड़की कमजोर हो जाती है, तो उसे सुनना पड़ता है. टेक्निकली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. खैर, इस टॉपिक पे हम फेमिनिज्म में ही पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का फायदा नहीं है. उस टाइम मैं शील्ड वगैरह भी लेके आऊंगा अपने डिफेंस में. एक बार एक मैम बहुत भड़क गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे फेमिनिज्म में. वो मेरे साथ हुए ना ऐसे इंसिडेंट, में डर जाता हूँ. वो उन्होंने मे बी द नरेशन आई वाज गोइंग गिविंग, वो शायद उनको कहीं पर्सनली टच कर गया था. शी सेड आप पुरुषों ने हमेशा, और मैंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं. I have a sister, I have a mother, and they both are very strong. We all are dominated by them. तो मेरे घर में भैया कोई, we have seen हाँ, they have strong opinion. In Kerala there is matriarchy. अगर इंडिया में आप देखोगे ना कहाँ पे है, तो in north east some tribes they have strong matriarchy. Otherwise in Kerala Nair community, women are the most important people and they decide. Most of the big decisions are taken by the grandmother, mother, daughters. वो लोग ज्यादा डिसीजन करते हैं, men they have just to obey. तो वहां पे matriarchy है. We'll study in next chapter. So Reeve and Miller, they are the business class people, small business owners, carpenter वगैरह हैं ये. Miller has a mill, oil mill. Reeve, carpenter. Their tales are vulgar tales. Reeve and Miller, their tales are vulgar tales. So what happens? Reeve tells a story that there was a miller, his wife had an affair with some other people, and daughter was also seduced like that. So he attacks. हाँ, पहले मिलर स्टार्ट करेगा, रीव उसको रिप्लाई करता है. तो मिलर और रीव दोनों की कहानी सेम है. दोनों की कहानी में दे आर टारगेटिंग द वुमेन इन देयर हाउस. वो कहता है तुम्हारी वाइफ ऐसी है, दूसरा बोलता है तुम्हारी वाइफ ऐसी है. बोथ आर वल्गर टेल्स, बोथ आर क्वाइट टेल्स, एक दूसरे को चुप कराने के लिए. नो नीड टू रीड, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें. जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ वल्गर टेल्स. रीव एंड मिलर आर इंपॉर्टेंट फॉर वल्गर टेल्स. ठीक है. If the tales have some literary meaning, then the tales are important. If they are not having literary meaning, just attack. So what is important? The theme. The theme is vulgarity. So again, he is showing the social vulgarity and the standard of women. How women were treated. एक दूसरे की wives and daughters पे अटैक करते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है most important storyteller. सबसे important. No, not Knight, not Parson. क्लर्क वो ऑक्सफोर्ड का हो चुका है. द नेक्स्ट स्टोरी टेलर इज चॉसर. इंपॉर्टेंस वाइज, नाइट, नन, प्रीस्ट, डॉक्टर, ये मैं आपको टाइम के साथ बता दूंगा. नेक्स्ट नन, प्रीस्ट, देन उसके बाद नाइट. चॉसर्स टेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, हेरीबेली, ही सेज व्हाट मैन आर दाउ. जब आपस में बातचीत चल रही होती है, and the tale people are, so Haribeli looks at Chaucer and the first line he speaks is what man art thou. So this is how Chaucer gets introduced as a pilgrim. What man art thou? ART लिखना उसको, Old English. What man art thou? So Chaucer replies that I come from Southwark. He tells the area. Chaucer replies that I come from Southwark.
He tells his area. What man art thou? Then he says that I come from Southwark. So area is important. Chaucer is telling his own small town area, hometown area. Southwark. I come from Southwark. Then Harry says, now it's your turn to say. So he says, Chaucer says that I have a little wit. Chaucer बोलते हैं that I have a little wit. मतलब मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टोरी बताने का. These actually stories were in poetry form. Canterbury Tales is a poetry. So he says that I am not having that standard of telling a story in poetry form, so I have little wit, which means the man who has written Canterbury Tales is being down to earth. उसी ने सारी कहानी लिखी है लेकिन खुद को ऐसे दिखा रहा है कि नहीं मुझे तो पोइट्री नहीं आती है, मैं तो आम आदमी हूं. So these words, phrases are important. In Canterbury Tales, name the character who had little wit about poetry. Name the character who comes from Southwark. Who says, what man art thou? And to whom? If phrases yaad rakhna. Then Harry Bailey says, no. Please. You have to tell a story. He says, okay. So Chaucer continues the tale. He starts the tale of Sir Thopas. Tale of Sir Thopas. Name is more important. Story is not that much important. Name is very important. It is in prose. Sorry, poetry. क्योंकि उसने पहले ही बोला ना कि मैं पोइट्री मुझे ज्यादा नहीं आती. He said, no, please. So he tells the story, the tale of Sir Thopas. Simple point. आपने एक चीज नोट की होगी जो बहुत पहले एक शेविंग ब्लेड आता था उसमें लिखा था टोपाज. Topaz dynasty, warriors dynasty. Sir Thopas is that Topaz dynasty wala person. Topaz is the blade. Okay? So if you want to know Sir Thopas, he comes from Topaz dynasty. वैसे I don't think इतना tough question पूछेंगे. किस नाम से ब्लेड आते थे? शेविंग ब्लेड्स. उसमें तलवार बनी होती थी. बहुत 90s की एड में आते थे वो. अभी पता नहीं शायद बंद हो गया. अब तो आजकल जिलेट विलेट चल रहे हैं ना. अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है. Story is not important. This Sir Thopas is in love with a nymph. एक परी से इसको प्यार है, elf से. So he is in love with an elf. What is elf? Kind of a divine thing. Nymph, beautiful. जो elf आप बता रहे हो ना, big ears and all, वो पोप का description है. Elf, salamanders, gnomes. Elf मतलब kind of परी, not human. Angel, not human. He falls in love with her. He wants to find about her. He is looking for her. He is searching her. It is the story. But Chaucer has made fun of it. It is the story of a warrior who is in love with a nymph, looking for that nymph. He takes a journey, but it is not a heroic story. It is a mock style story. What is mock style? Mock heroic. When you make fun of someone, ये mock heroic है. Chaucer makes a satire on. लिख लो उसको बहुत अच्छे से. Chaucer makes a satire on medieval romances. Which story can be called a satire on medieval romance? He's actually attacking the warriors that they are always dreaming that they will be wooed and loved by the goddesses and they are not concerned about society. Chaucer की tale है tale of Thopas. Topaz dynasty से he is in love with a nymph. So he's a kind of warrior, a commander. But what is he doing? Leaving all other works just looking for a girl. Chaucer is dealing with this work in a mock heroic way. Mock heroic way, heroic style, उसका मजाक उड़ा रहा है. तो heroism तो है यहाँ पे, but वो मजाक उड़ा रहा है उसका. He's making fun. And what kind of main target is? The target is the attack, the satire on medieval romance. ये satire है. This work is a satire on medieval romance. What is satire? Kind of an indirect statement when you attack someone. There are good satires, but again, satire is something that is indirect. You want to say something, but you make an indirect statement. That is satire. Especially to mock someone, to make fun. But sometimes your intentions can be good. ठीक है?
जैसे मम्मी हर बात पे गुस्सा करती है तो बोलती है और चला मोबाइल, कुछ भी हो गया तो बोलते हैं और चला फोन, तो और चला फोन इज सटायर because she wants to say that this is the reason your attention is diverted and you are getting the result. So sometimes the satire can have good intention. According to John Dryden, satire is an amendment of vices through correction. Write down. Satire की definition लिख लो लगे हाथ. Satire is an amendment of vices through correction. Satire is an amendment of vices through correction. The definition by John Dryden. Satire की definition by John Dryden. Satire is an amendment of vices through correction. Now the point is, another point, what do you mean by medieval romance? First of all, medieval romance will never deal with an ordinary man. No shepherd, no poor person. Always a warrior. Medieval romance का मतलब यही है कि वो रॉयल है और कोई प्रिंस या प्रिंसेसेस है, इनकी स्टोरीज है. The first thing in medieval romance that you have to understand is it will have a hero from royal family, royal class. Then he may fall in love with a princess. He may fall in love with a elf, nymph, some demigoddess, half goddess या half woman. And to win that love, you will have to go through a great task, challenge, fight, war. यानी medieval romance में maximum चीज जो आपको मिलेगी, chivalry, bravery, सबसे ज्यादा. It looks good, na, medieval romance. But what if they ask you, what do you mean by medieval romance? So where there is a great person, a warrior with a great character, he has to protect a girl. Maybe the girl is captured by some demon. So he's killing the people, fighting, showing his war skills, plus showing his character, greatness, loyalty, other things, and finally wins the princess. That is medieval romance. Idealism, I guess. Great heroes protecting heroines. But remember, medieval romance doesn't deal with shepherds, poor people, simple love story. That is not medieval romance. Clear? It is an attack on medieval romance. Now, no need to read. अब देखो क्या होता है. This poetry, this story is incomplete. अभी complete नहीं है. Write down this. Tale of Sir Thopas is incomplete. A person starts crying when Chaucer tells the story. Don't write. लिखना नहीं. लिखना नहीं इसको. कौन रोना शुरू कर देता है? When Chaucer tells the story, somebody starts crying. Really, बहुत बढ़िया. Yes. Everybody starts crying. With emotions? No. This is for God's sake, please. I have never seen this much worst rhyming. तुम्हें किसने पोइट बोला? बंद करो. Exactly line तो मुझे याद नहीं है. मैंने एक दो बार बहुत पहले किसी बैच में देख के लिखवा दी थी. आप चेक कर लेना चाहिए. But Harry Bailey exactly क्या बोलता है? For God's sake, बंद करो. नहीं सुनना है. Please. Why? Poor rhymings. वो कहता है क्या rhyming है ये? What is this poetry? So who stops Chaucer Tale of Thopas? Harry Bailey himself. This is the point. उसको रोक देता है. It is stopped. This is incomplete tale. Why it is incomplete tale? Because Harry Bailey, the host who started the story system and who was the manager of the storytelling thing, he says, please for God's sake. बहुत अच्छे वर्ड बोलता है. सब जुबान पे ताला लगाओ, बंद करो, बहुत हो गया. And he says, how can you do this? How can you go for this worst rhyme? ऐसी बेकार rhyming कैसे करते हो? Then Chaucer says, I told you that I'm short wit. He says, please change the story. And here Chaucer says, fine. I will say a little thing in prose. A little thing in prose. He says, please let me speak in prose. And this is how Chaucer tells two stories.
अब दूसरी स्टोरी आएगी, अ लिटिल थिंग इन प्रोज, टेल ऑफ मेलिबी। ये भी एक फनी स्टोरी है, कोई बहुत सीरियस स्टोरी नहीं है। टेल ऑफ मेलिबी। द फर्स्ट थिंग, विच टेल इज इन पोइट्री? थोपस। which tale is in prose? Chaucer as a first poet, he himself is poet, but still not taking any credit. He says नहीं मुझे तो prose में लिखना है, मुझे तो आता ही नहीं कुछ. So he goes for another tale, and we have two prose tales, one by Parson, one by Chaucer. Tale of Melibee is in prose. याद कर लेना, क्वेश्चंस में आएंगे आपके, ठीक है, याद रहेगा. Now what happens? There is a couple, they live together. उसमें लड़की का नाम important है, that has been asked in exam. Dame Prudence. Dame Prudence. This is the name of the girl in the story. There is a couple. They have been attacked and robbed. Robbers आते हैं, उनके घर से बहुत कुछ लेके चले जाते हैं. उसके बाद husband wife का debate start होता है. So this work deals with a debate. It's in mock style. Mock debate style. Husband tries to blame the woman. Dame Prudence speaks for herself, and overall it's just a debate with no ending. तो ये भी इनकम्प्लीट एक तरीके से, क्योंकि इसमें कोई जीतता नहीं है, but it is the woman's side, how that woman speaks up in debate. So technically the first example of a debate between a male and female. ठीक है, first example of debate. इससे पहले डिबेट पोइट्री हमने देखी थी इन एंग्लो सेक्शन, आउल एंड नाइटिंगेल. नाउ दिस इज अगेन अ डिबेट एंड इन प्रोज एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन. इससे पहले एक बहुत फेमस डिबेट है, गार्गी याज्ञवल्क्य, सुना आपने? शास्त्रार्थ हुआ था. द फर्स्ट वुमन हु चैलेंज्ड अ ग्रेट नॉलेजेबल मैन, याज्ञवल्क्य, गार्गी याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ. कहते हैं उसमें इतिहास में उसने उसको हरा दिया था, लेकिन उसको कोई फिर बात नहीं करता उसकी. So technically, this is one of the first example of debate between a man and a woman, and the lead character Dame Prudence. This is the name. It's very important. ये नाम नहीं भूलना है, पेपर में आ चुका है. Dame Prudence नाम नहीं भूलना. हाँ, Dame is girl, married. वैसे normally unmarried girl के लिए होता है, but she is married there. They are couple. अब आती है सबसे important tale. Wife of Bath's tale is very very important. The next tale we are going to deal with is really very important, and you can say that both are equally important. I will not say first and second. Nun priest. पार्सन कुछ नहीं है. पार्सन की टेल सिर्फ रिलीजियस सरमन है. Actually the point is किसकी टेल में क्या रेफरेंस है. The most important tale, nun priest tale. Nun priest tale. The first and most important thing, nun priest tale is a beast fable. सबसे important चीज, इसकी टेल जो है कौन सा स्टाइल है? Beast fable. What is beast fable? Yes, when in the story you have animal imageries, animal references, animal characters. Animal characters. हमने बचपन में कहानियां पढ़ी है ना, शेर, चीता, खरगोश, टॉर्टवाइज वगैरह की स्टोरी, रैबिट, रेस, ये सब बीस्ट फेबल है. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव रेड, देयर वाज अ मंकी, ही गोस टू द टाइगर, सेज दैट देयर इज अनदर टाइगर, ही इज चैलेंजिंग यू, so he says, okay, tell me, where is that tiger? He takes him into the pond, he looks at his own reflection, he jumps, and this is how the monkey wins. These kind of tales, they are beast fable. In African literature, these kind of stories are very much popular. अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, बीस्ट फेबल इन अफ्रीकन लिटरेचर, ये पेपर में आ भी चुका है. वी हैव अफ्रीकन लिटरेचर इन आवर सिलेबस, व्हिच इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन मेन सिलेबस, बट वी हैव अफ्रीकन लिटरेचर इन सिलेबस. वी कैन नॉट डिनाई. दिस इज कॉल्ड ट्रिक्स्टर. ट्रिक्स्टर टेल. ट्रिक्स्टर टेल. स्मॉल एनिमल fooling big animal with a trick. एक छोटा एनिमल दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े एनिमल को बेवकूफ बनाता है. Trickster tale. Trickster. ठीक है, these are the point to be noted. Now,
The first ever fables. What is fable now? Mostly the short stories which give us some meanings. The famous fables from India, Panchtantra, Vishnudas Sharma, Panchtantra, has a Guinness Book record, translated in 103 languages. 18 countries के elementary schools में, in the elementary schools of 18 countries, Panchtantra, Vishnudas Sharma gets translated and it's in the syllabus, including Russia. वहाँ के स्कूल में पढ़ाया जाता है. Greedy friend, greedy this, greedy that, as stories. Remember that woodcutter, he has an axe, then axe is going into water, then an elf comes with 3 golden and silver. ये सब fables हैं. So first ever recorded reference of fable is written by Aesop, the first ever writer to write fables. Aesop's fables, please remember this. Because if you read normally William J. Long or something like that, you will not get these references. तो हमें हर चीज साथ में याद रखनी है. Aesop's fables. Then one of the most popularized, पहले तो ये लिख लो, who is Aesop? A classical writer, great Greek writer, the first person to write fables. In exam, if a question comes that this fable is inspired from, and suppose you have no idea, and if Aesop is in options, he is the first fable teller to take a reference. अगर पेपर में नहीं आ रहा है और फेबल का कनेक्शन बन रहा है, तो Aesop fable is the first ever fable collection. Second thing, unclaimed work but beast fable. One of the most famous work. Renard the fox. Extra ही लगाया मैंने यहाँ पे. Renard the fox. Story of fox and vixen. Fox, female fox. Fox की स्टोरी बहुत सुनी होगी आपने. चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी. One of the first unclaimed greatest work, which is of good work, Renard the Fox. Unclaimed मतलब no authorship. But ये भी एक beast fable है. One of the first beast fable from Anglo-Saxons, Renard the Fox. Author not sure. That's why non-priest tale is very important. एक tale से reference से निकल रहा है. Clear? एंग्लो सेक्शन में एक्चुअली बहुत सारे राइटर्स की कोई श्योरिटी नहीं है, बट देयर आर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रिटन वर्क्स. सम ऑफ दोज वर लेफ्ट विद सम किंग्स, कमांडर्स. Even earlier time people were writing diaries. Diaries are not written with an intention to be published. Nobody wants his diary to be published. It's private, personal. But what if you die randomly? तुम तो डायरी लिख रहे हो, अचानक से कुछ हो गया, तो घर वाले तो सामान दे देते हैं ना, कचरे वचरे में जो भी है जाएगा. Then diary gets published. सैमुअल पेपीज के साथ क्या हुआ था? He used to write diaries. इसको थोड़ी पता था डायरी मेरी पब्लिश होगी. He was writing diaries by 1660. डायरी पब्लिश हुई 1825 में. 1825 डायरी मिल गई किसी रिसर्चर को. When he went through the diary, he found that this diary speaks about the timing of Charles II. Multiple references. Nobody lies in the diary. One of the most important significant thing related to diary is its truth. कोई अपनी पर्सनल डायरी में झूठ लिखता है? पर्सनल डायरी तो कोई झूठ नहीं लिख सकता ना. फेसबुक पे लिख सकते हैं फीलिंग हैप्पी, बस स्टैंड पे खड़े होकर लिख सकते हैं चेक्ड इन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट. वो फेसबुक पे चलता है, फेसबुक पे चल सकता है फ्लाइंग बाय बस. लेकिन डायरी में यू राइट समथिंग व्हिच इज इट्स अ मिरर ऑफ योर हार्ट. उसने 1660 में लिखा था, अब वो लग गई रिसर्चर्स के हाथ में. 1825 में पब्लिश हो गई. फर्स्ट एवर पब्लिकेशन 1825. दिस गेव आइडिया टू अदर रिसर्चर्स. इफ अ पर्सन राइट्स डायरी, he will not end up with one book. पार्ट 2 ढूंढता वो, जैसे गजनी मूवी में था, एक डायरी पढ़ता तो दूसरी भी ढूंढता वो. पार्ट 1, पार्ट 2. पता लगा 1970 to 1983, 13 साल कंटिन्यू, 13 years सैमुअल पेपीज की डायरी लाइन से पब्लिश हुई है. फाइनल पब्लिकेशन 1983. जिस आदमी को हैबिट होती है डायरी लिखने, वो जाती नहीं है, वो अपनी पूरी लाइफ लिखता रहता वो. एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स टू नो अबाउट रेस्टोरेशन टाइमिंग्स इज सैमुअल पेपीज डायरी. देन जॉन एवलिन की डायरी मिल गई, फिर मार्गरेट कैवेंडिश की डायरी मिल गई.
और ये सारे डायरी राइटर्स हमारे, पेपर में क्वेश्चन आता है, डायरी कब स्टार्ट होती है, खत्म कब होती है, व्हाट आर द रेफरेंसेस. So just like that, these writers were writing, they didn't know we will become famous. In fact, most of the writers, many of you are writers, you have written poetries, but they are not getting published, so nobody knows you. What if it is randomly falling in somebody's hand, that person gets us published and doesn't want to give you the credit, then writer is unknown. I tell it to my people, do not post your original poetries on Facebook. बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, फेसबुक पे अपनी ओरिजिनल राइटिंग्स डाल रहे होते हैं. मत डालो, कॉपी हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब वो पब्लिश हो चुका है. लेकिन तुम पब्लिश करवाने जाओगे ना, पता लगा सर तो पहले छपा हुआ है, प्लेजरिज्म में आ जाएगा तुम्हारा अपना ओरिजिनल वर्क. मैं तो कई लोगों जिनको पर्सनली जानता हूं उनको मैं मैसेज भी करता हूं, डू नॉट पोस्ट इट ऑन फेसबुक. इनफैक्ट if you're writing papers and you want your teachers to check it, always send them by email. ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूं, स्टूडेंट्स के पेपर्स को थोड़ा बहुत एडिट करके अपने नाम से पब्लिश कर लिया. तभी तो मैंने आज तक एक भी सिंगल पेपर पब्लिश नहीं किया अपने नाम पे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया रियलिटीज यही है. यूनिवर्सिटी 3 years मैंने क्लोजली देखा उनको, रियलिटी ऑफ PhD, रियलिटी ऑफ दीज पेपर्स. पैसे से भी होती है. दरियागंज में बहुत पब्लिकेशंस बैठे हैं, मिनिमम 1800-2000 से आपके पेपर पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे. स्कोपस के रेट हाई हैं. अगर आपकी इमरजेंसी है तो 50,000 में पेपर मिल जाएगा. मेरे किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब के लिए फास्टेस्ट चाहिए थे, कि आसमी सर आप बात करके पैसे कम करवा दो. मैंने कहा आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस मनी वाला थिंग. बाद में उसने मुझे बताया कि सर उसने बात की, अर्लियर दे वर आस्किंग सम 70,000 50,000 तक फाइनल हुआ एंड शी गॉट 2 पेपर्स. लोग बैठे हैं, टीचर्स पेपर लिख देंगे आपके लिए. बैक डेट में एंट्री होती है PhD में, इसलिए ध्यान रखना सब चीज़ों का. ठीक है, बचने का तरीका है फॉरवर्ड इट थ्रू ईमेल, दैट इफ इट इज गेटिंग पब्लिश समवेयर, दैट ईमेल विद टाइमिंग डेट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट यू आर द ओरिजिनल राइटर. यू कैन चैलेंज. ठीक है, चलो गेट बैक. नाउ लेट्स गो फॉर द स्टोरी बीस्ट फेबल. हमारे एक एडहॉक फ्रेंड थी, वो DU में पढ़ाती थी. वो स्टूडेंट्स ना क्या करती थी, शी वुड आइडेंटिफाई सम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं. शी वुड आस्क, मोटिवेट देम, व्हाई डोंट यू राइट समथिंग ऑन क्वेयर स्टडीज. अच्छा मैम, श्योर मैम. वो लड़की 10 दिन पढ़ के लिख के आ रही है क्वेयर स्टडीज. नो नो, दिस हैज प्लेजरिज्म, आई वांट इट ओरिजिनल. उसने 2-3 बार और चेक करके ओरिजिनल कर दिया, लिया, गुड गुड गुड. भूल गया वो, उसको दूसरे काम में लगा दिया, इसको एडिट विडिट करके अपने नाम पे छाप लिया. एंड शी हैज 30+ पेपर्स ऑन हर नेम. अब तो ज़्यादा हो गए, आई एम श्योर, अब तो 70-80 हो गए होंगे. आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज 3 years old थिंग. People do this. Okay, now be aware. Okay, None Priest Tale, the story of a fox. Chanticleer. This is a rooster. Don Russell. Fox. Fox का नाम है Don Russell. I'm using this E, archaic style. स्पेलिंग में मैंने एक्स्ट्रा E लगाया है. So Chanticleer is a rooster, a male hen, and he's proud of. He has many other hens, many other hen actually. Don Russell is a fox. So ये एक मुर्गे की कहानी है, ये रही लोमड़ी, and that rooster is handsome, proud of his voice, is muscular, and he has a kind of his own kind of kingdom. He has many hen under him. The most lovable, trusted wife hen, Pertolate. Pertolate is his wife. Pertolate, Pertolete. Pertolate is his wife. ये एक मुर्गी है, उसकी हेल्प वाइफ है, ट्रस्टेड वाइफ, लॉयल वाइफ. Chanticleer is proud of his sound, his long neck, his appearance, and he is the prime target of Don Russell. Now please remember this thing. What do you mean by the word Don? इंडिया में क्या मतलब डॉन का? छोटा डॉन.
criminal. But Don actually comes from royal dynasty. The word speaks for royal connection. Don Russell, Don Quixote, Don Juan. The actual word of Don is somebody who's powerful, who comes from royal family, royal blood. So remember this thing. अगर कोई आपको Don बोले तो be happy. Don word वहां से आया. When the Britishers came to India, they started calling those local Bahubalis Don. So gradually it became a name. आज बहुत सारे Dons को आप जानते हो, ठीक है? Don is a word that is connected with the monarchy, royals, represents power. Most of the heroic romances have the names of heroes starting with Don. Some other examples: Don Russell, Don Juan. जैसे युआन बोलते हैं वैसे, in pronunciation it will be युआन. Don Quixote, many others, और भी बहुत सारे Don हैं. They are the famous Dons in literature, written by Byron, written by Cervantes. Just to make you understand, otherwise एक छोटा सा word miss हो जाएगा. Don Russell, तो उसका नाम Fox का रखा गया है in a heroic way. Don Russell. Who is the target of the fox? That rooster. So one day what happens? Fox is around that rooster and there is a boundary in between. लकड़ी का बाड़ा बना हुआ है. It's a cage. Fox cannot enter in the cage, but they can look at each other, they can talk, and there are some kind of holes. He praises the rooster. He says, you have a beautiful neck, and when you raise your neck and give the voice, the sound, it's mesmerizing. Rooster खुश हो जाता है, gets happy. He says, you want to hear my voice? The fox says, yes. So ये क्या करता है? Through that net, जो जाल है, उसमें से गर्दन बाहर निकालता है, लकड़ी के उसमें से, and does the voice thing. So when he stretches the neck out, Don Russell catches him from the neck, takes him out, and starts running. So when Don starts running, taking chanticleer in his mouth, the old woman, there is an old woman and his daughter. They change. Because they are in the farm of an old woman. So there is an old woman, there is a daughter. They chase Don Russell. उसको बचाने की कोशिश करते हैं. And in between, in the house, everybody is panicked. Especially Pertolate. Most lovable, trusted wife. Loyal wife. Pertolate. While others are crying, his other wives, what does Pertolate do? नहीं, वो तो खुद ही बोलता, वो chanticleer खुद ही बोलेगा. Pertolate jumps in fire, burns her wings. He burns her wings. This hen, there is some hearth, कोई भट्टी है वहां पे, उसमें आग में कूद जाती है. She jumps in fire, burns her wings. Pertolate burns her wings. Symbolic meaning: when my husband is dead, what will I do with this beauty? Sati Pratha. No, this is not Sati Pratha. Kind of. Sati Pratha पे भी I'll give you a lecture. तब आपको subalterns पढ़ाऊंगा तब. उसमें भी studies की है मैंने. So Pertolate burns her wings. The intention is that as a loyal wife, what will I do of this beauty if my husband is not there? She thinks her husband is dead. She burns her wings. Now, when this fox is running and being chased by the grandmother and others, the old woman, Chanticleer uses his brain and tells the fox that you should curse those people. ये कह रहा है उनको गालियां वालियां दो, abuse them. Otherwise, they will never stop chasing you. Fox is running. That old woman, daughter, they are chasing with sticks. So he says, the rooster, he says, please curse them, abuse them, make them leave, make them run back. Otherwise, they will never stop chasing you. वो कहता है जो तुम्हारे पीछे पड़े ना उनको थोड़ा धमकाओ, गालियां वालियां दो, कर्ज करो. तो फॉक्स को समझ में आता है बात तो सही है. फॉक्स मुंह खोलते, opens the mouth to curse. Rooster gets a chance, he gets released, climbs some tree, and then he's safe. When his old woman takes him back, he shows his love and regards to this Pertolate and says that you are still beautiful for me. उसका ending है.
It's a beast fable. True. आपको it's a good thing. Whenever you take decisions in a haste, it goes in a bad way. तो हमेशा सोच के विश्वास करो. पहले कंफर्म तो कर लेती, जैसे खुद को जला लिया. ठीक है. In most of these tales, either they are talking about idealism or they're talking reality. So it's a very important tale. Especially, do not forget the name Don Russell, Chanticleer, Pertolete. तीन नाम सबसे important है. Plus, how Rooster got saved. तो ये line. He tells Don Russell to curse the old woman, abuse the old woman, and this is how he opens the mouth. What does Pertolete do? Burns her wings. But for why? Because this beauty is of no use if my husband is not alive. Kind of loyalty. ये pointers सारे याद रखना. Pointers में question आ सकता है. याद रहेगा? Next one. Doctor's Tale. It is compared to that chase. That chase has been compared to Achilles and Hector fight scene. Very good. इसमें कौन सी बुक में पढ़ा आपने इसको? जो चेजिंग सीन है फॉक्स का, that has been compared to Achilles and Hector scene from Greek Trojan War. Trojan War reference लिख लो. Hector Achilles War. Hector Trojan hero, Achilles Grecian hero. जब ये फाइट करते हैं Achilles chases Hector, तो उससे कंपेयर किया गया. इट्स अ कंपैरिजन. सो टेक्निकली अ ट्रोजन रेफरेंस. ये ग्रीक रेफरेंस याद रखना. हीरोइक स्टाइल है ना ये. हाँ यस. बट मेन सेंट्रलाइज कैरेक्टर्स विल बी बीस्ट. एनिमल लाइफ. सेंटर कैरेक्टर एनिमल लाइफ. जंगल बुक है ना, मोगली. बीस्ट फेबल स्टाइल है, क्योंकि उसमें मेन कैरेक्टर मोगली है. बट मोगली इज रिप्रेजेंटेड एज अ जंगल बॉय, एनिमल काइंड ऑफ बॉय. याद रहेगा ट्रोजन वॉर एंड ऑल. नेक्स्ट वन, डॉक्टर ऑफ फिजिक. Tale by him. This tale is again going to show reality. It's the tale of a poor man who was under heavy debts due to pandemic. इसमें एक important point है. Poor old man under heavy debts. The poor old man is under heavy debts and is not able to pay the debts. The business people, the other people, those who are forcing him and threatening him, they force him to offer his daughter. When this old man is not able to pay the debts, they force him. जिसने उधार दिया है, the money lenders, those who have lended money. The story is not important. कहानी important नहीं है. That's why I'm not telling you the story exactly. There is some point. एक खास चीज है इसमें, special point. When it tells this story, Harry stops him. He says, wait, stop. And after that story, when he stops him, Chaucer describes Harry. He was perplexed, uneasy, showing that he knows that person personally. This is how Chaucer tells us a message that what he's telling is exact reality. The Doctor of Physics की tale भी unfinished है. Who stops him? Harry himself. Harry इसको रोक देता है. And the way he stops him, he looks restless. ऐसा लगता है जैसे वो पर्सनली उसको जानता है. Who gets restless after the tale of Doctor of Physics? या assertion reason में आएगा. Assertion में question आएगा. Doctor of Physics start telling a tale of some old man
Everybody stops him. Chaucer notices something on his face and it looks that something is like this. Reason में आ जाएगा. Chaucer shows the character having a face where it feels like this person, Harry knew the reality and knows that person, knows those people. So maybe this is the thing. Chaucer का एक style है. Chaucer is telling you a story, but in between he gives you hint that I'm telling the reality. वो हर बात पे reality बता रहा है. So this is again a way to tell reality. Why Harry stopped? Why he got perplexed? His face is like that he knows those people and doesn't want the truth to be revealed. The important point है. Next, Knight's Tale, the first storyteller. Knight's Tale. I know बहुत सारी tales हो गई हैं. Tale of Sir Palamon and Archite. Both are best friends and warriors. Both are best friends and warriors. But in a battle, they both get imprisoned. Both are best friends. पहले तो best friend है सबसे important चीज. And they both are warriors. Both are best friends and both are warriors. अब क्या होता है? They are in the prison. In the prison, they see a girl, जो किंग या कमांडर की बेटी है, Emily. And they both fall in love with her. उसको जेल में से देखते हैं. टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती फर्स्ट मूवी आई थी ना, जिसमें वो जेल में से हीरोइन को देखता है. वो एज इट इज कॉपीड है यहाँ से. जेल में से देखते हैं उसको ये. Both fall in love. Now they both are in a strong emotion of love. So the first thing they have to do is get rid of each other. तो पहले ये मतलब पैलेमन आर्केड दोनों सच नहीं बता रहे होते हैं दूसरी कंट्री को. फिर उनमें से एक दोस्त होता है वो जाके दूसरी कंट्री से मिल जाता है, so that he'll get married. The girl falls in love with Palamon. दोनों का इश्यू होता है. Then they go for a duel fight where they both get mortally injured and they die. This is the tragedy. Shakespeare makes it comedy. Shakespeare में क्या होता है? Palamon is still in the prison. Archite is flirting with the girl. The girl is in love with Palamon. Archite is trying everything to kill Palamon. So they arrange a fight. But Archite is already muscular because he is eating. Palamon is in the prison. So they give him some time, 15-20 days, that you also eat and do some practice, fight and all. Then you come. But in between, Archite's old beloved, she also reaches. Where Archite realizes that I have done wrong and he feels guilty. So Palamon, Emily, they get married. Archite and his old girl get married. That is Shakespeare's version, dark comedy. ये tragedy है. This one is tragedy. So just remember these two best friends, Emily. ठीक है? अब इसमें सबसे important point. Knight's Tale is based on Tacita. Tacita by Boccaccio. Boccaccio's Tacita. Knight's Tale is based on Boccaccio's Tacita. किसी किंग या कमांडर की जिसके साथ वो इम्प्रेजेंट थे वहां पे. इनकी जो बहुत ज्यादा चीजें है ना, इनमें डिटेल से मत पढ़ना. Palamon, Archite and Emily. What is most important in the entire story? जैसे अभी आप में से किसी ने पूछा ना कौन किसकी बेटी है, फादर का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है दो बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन एक दूसरे को चीट कर रहा है, एंड फॉर whom. तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. देन थीम्स. तो थीम में लव, ऑनर, डिसीट, ये सब आएगा. मेक श्योर यू रिमेंबर व्हेनेवर व्हाटएवर यू स्टडी, if the characters are directly connected with the themes and motives of the story, then those characters are important. कोई किसी थीम से रिलेटेड है, रिवेंज से रिलेटेड है, दोनों फ्रेंड्स हैं तो फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेन कैरेक्टर्स. दे बोथ चीट ईच अदर, स्पेशली द सेकंड वन. फिर उनमें ट्रू लव भी है, फेक लव भी है. तो मेन थ्री कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. सो अननेसेसरली और मत पढ़ना. और अभी भी रिमेंबर यू आर डीलिंग विद चॉसर ओनली. चॉसर इज अ बिग राइटर.
Then who is second big writer? Shakespeare. Third big writer? Milton or Eliot or अच्छा, टॉप 10 इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन से हैं ब्रिटिश हिस्ट्री जो आपको लगता है? डिकिंस, वर्ड्सवर्थ, हार्डी कीट्स और ड्राइडन और बायरन, टेनिसन, डन और मार्लो और ये लो, ये तुम्हारे प्लैनेट्स हैं, बिग राइटर्स. These are what? Big writers that you remember, right? चौसर से लेकर टी.एस. सीट के बीच में जितने बड़े राइटर्स हैं, डिकिंस, हार्डी, टेनिसन, ब्राउनिंग, डन, बेकन, बनियन, ये 0.5% है आपके सिलेबस का. ये बड़े राइटर्स, ये कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इनमें से आएगा. कहां से आएगा? ये जो तुम्हारा यूनिवर्स और जो प्लैनेट्स है ना, इनके बीच में जो छोटे छोटे राइटर है ना, पेपर तुम्हारा यहां से आएगा. वो नहीं पूछेंगे मिल्टन, वो पूछेंगे आइजैक वॉल्टन बताओ, रॉबर्ट बर्टन बताओ, थॉमस ब्राउन बताओ, जेरेमी टेलर बताओ. मिल्टन एवरीबॉडी नोज, रिलीजियस राइटर है इन रिलीजियस ग्रुप. वो ये नहीं पूछेंगे. वो शेक्सपियर भी नहीं पूछ रहे आजकल. वो माइकल ड्रेटन पूछ लेंगे, सैमुअल डैनियल पूछ लेंगे, क्योंकि ये भी सोनेट राइटर्स हैं, लेकिन लोग नहीं जानते. याट एंड सरे को पूछ सकते हैं. दिस इज माई पॉइंट. चॉसर कैंटरबरी टेल्स इज नॉट एवरीथिंग. ये सिर्फ स्टार्टिंग है. ये हमें करना इसलिए क्योंकि देखो आ चुके हैं क्वेश्चंस, लेकिन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में जो गैप है ना, वहां पे बहुत राइटर्स हैं, छोटे छोटे राइटर्स आएंगे, एक एक पैम्फलेट वाले राइटर आएंगे, और वो पेपर में आके आपके 2 मार्क्स खराब कर देंगे. जैसे जब जेरेमी कॉलियर आया था, पूरे रेस्टोरेशन लिटरेचर में हमने जेरेमी कॉलियर पढ़ा ही नहीं कभी. मैंने भी तो अटेम्प्ट कर करके सीखा बहुत कुछ कि कहां से आ सकता है. दैट हेल्प्स मी टू टीच. कहां से आया जेरेमी कॉलियर? क्योंकि किसी ने रेस्टोरेशन लिटरेचर क्रिटिसाइज किया था. जब मैंने फिर रेस्टोरेशन लिटरेचर का क्रिटिसिज्म पढ़ा, तो मुझे पता लगा चार्ल्स लैम ने आर्टिफिशियल लिटरेचर बोला है. वो मेरे किसी और पेपर में आ गया काम. तो इसलिए बड़े राइटर्स जो हैं वो तो है ही हैं, वो तो है ही, वो तो करने ही है. लेकिन इनके बीच में जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टार्स है ना, जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये भी आगे फंसा देंगे. वी आर स्टडिंग चॉसर. चॉसर में भी कैंटरबरी टेल्स. Still we know French culture, French literature, Italian literature. We have Gower, we have Langland, we have Ockley, we have Henryson. अब ये सब करने हैं हमें राइटर्स. तो हो सकता है we are prepared with Canterbury Tales. सर बहुत अच्छे से आता है Canterbury Tales is on tips. और वो हो सकता है जॉन गावर में से किसी फ्रेंच वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लें. We have to be prepared with everything. इसलिए the best thing is jack of all trades. हाँ, पूरा लाइन यही है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नथिंग. राइट? अच्छी चीज है, बुरी चीज है? हैव यू हर्ड दिस लाइन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नथिंग? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्या बनना है? मास्टर बनना है किसी एक चीज का, या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? नेक्स्ट लाइन क्या है? बेस्ट थिंग इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, मास्टर ऑफ फुटबॉल हो, और क्रिकेट में आपको बैट पकड़ने नहीं आता, हॉकी में आपको पता ही नहीं कैसे पकड़ते हैं. इससे बेटर भैया थोड़ा थोड़ा सब में आता है, जिसमें जिस दिन अच्छा हो जाए. इन नेट सिलेबस being master of one particular topic, it's not that possible in 6 months. But what if you are jack of all trades? सब आता है. कितना आता है? परफेक्शन नहीं है, बट एवरेज गुड सब में है. If suppose you ask me, sir, यूनिवर्सिटी लेक्चर सर, मैं नहीं डरूंगा, मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या टॉपिक दोगे? कुछ ना कुछ बोल के आऊंगा, 1 घंटा पक्का बोल के आऊंगा, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है. मैं पीएचडी नहीं कर रहा किसी एलिजाबेथन पे या किसी साइबॉग लिटरेचर पे. I know 10 writers there, 10 writers there, 10 writers there, 10 concepts there. So in net, we have to be jack of all trades. दूसरों से हमें आगे जाना है. इसलिए कैंटरबरी टेल्स हो या कुछ और भी हो, रिपीटेड सेम डायलॉग, जितना करवा दूं इतना कर दो. इससे ज्यादा हिम्मत है, ज्यादा गट्स हैं, तो कम एंड आस्क द होमवर्क, आई गिव यू. होमवर्क भी मेरे से मांग लेना कि सर जो आपने पढ़ाया, वट एवर यू टीच सर, आई हैव डन दैट, आई एम डैम गुड विद माई क्लास नोट्स, स्टिल आई हैव एनर्जी एंड टाइम लेफ्ट, देन आई गिव यू होमवर्क. फिर मैं साइड में कुछ और वर्क्स बता दूंगा दैट ओके इफ यू आर फ्री, गो विद द डिस्टोपियन राइटिंग्स.
इफ यू आर फ्री देन ओके स्टार्ट फिनिशिंग बुकर अवॉर्डी बुक फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, क्योंकि घूम फिर के पेपर में आएगा, इसलिए अननेसेसरी मत पढ़ना. आई नो यू हैव योर ओन ब्रेन, आई नो यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स. इसने ये बोला ये भी पढ़ लेते हैं, उसने वो बोला है, बट अल्टीमेटली खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. कहावत सुनिए ना, दो नाव में एक साथ सवारी नहीं करनी चाहिए. नेवर सेल इन टू बोट टुगेदर. हमारी वाली बोट है, स्टीमर है, ये स्ट्रॉन्ग है. हाँ, जस्ट स्टिक टू दिस. भले हमें कोई भी याद हो जाए, कोई भी अननेसेसरी चीज, लेकिन हम चैंटिसलर भूल गए, पर्टोलेट का नाम नहीं याद आया, दैट विल बी रिस्की. सो बोकाशियोस टेसिडा याद रहेगा. नाउ वन मोर पॉइंट जस्ट ऐड ऑन. कैंटरबरी टेल्स टोटली बेस्ड ऑन Decameron. Boccaccio's Decameron. Boccaccio's Decameron. Decameron is also having story within stories, frame narrative style. Boccaccio's Decameron, it also has story within story concept. Boccaccio's Decameron. Frame narrative, story within story. What is frame narrative? How Canterbury Tales has story within story? बहुत बढ़िया, very good. What is the first story? The first story, no. What is the main story of Canterbury Tales? The main story of Canterbury Tales is that some people are going to the journey of Thomas à Becket. That is the main story. आपकी जो main story है, वो main story है that it is tabard in. Some people, they are going to the shrine of Thomas à Becket. This is the journey. This is the main story. ये है main story, base story. In that journey, one person suggests, let's tell stories. So there are branches. These are story within stories. Main story है journey. उस story में दूसरी story start होती है. So this is frame narrative. Chaucer's Canterbury Tales frame narrative has been inspired from Decameron. वो डायरेक्टली पूछने के बजाय फ्रेम नैरेटिव स्टाइल पूछेंगे. ये भी पूछ सकते हैं, Chaucer's Canterbury Tales is based on frame narrative. Which frame narrative has influenced Chaucer's Canterbury Tales, or who can be the source of that frame narrative? तो Boccaccio और Decameron, इनमें से कोई भी आंसर आ सकता है. Now the next tale. किसी टेल बाकी रह गई अब? पार्सन, जो इंपॉर्टेंट टेल में से है. आई थिंक पार्सन है, मोस्ट ऑफ देम हो गई है. इंपॉर्टेंट तो हमने सारी कर ली है. पार्सन इज द लास्ट स्टोरी टेलर. पार्सन इज द लास्ट स्टोरी टेलर. Parson is the last storyteller. His tale is in prose. Point to be noted, point to be underlined. Chaucer's tale of Melibea and Parson's tale. Two tales are in prose. Tale is in prose. Most important point, Parson's tale is not a tale but a sermon. Parson's tale is not a tale but a sermon. Sermon is didacticism. उपदेश देना. Something didactic, something preaching. Sermon. उपदेश. So as it is the concluding tale, so maybe Chaucer selected this tale to be the last because it was the final sermon. And why it is in prose? Because Wycliffe's Bible, translated Bible, was in prose. So it is a religious writing. That's why it is in the style of Bible. अगर आपसे पेपर में पूछते हैं पार्सन ने प्रोज स्टाइल क्यों लिखा, so the direct connection is Bible. Wycliffe's Bible was in prose. It is a religious work. Parson must have taken a direct connection. बोलो संजना, confused? देखो, in this age there was a first person called Vulgate, Saint Vulgate. This Saint Vulgate is also called Saint Jerome.
Saint Vulgate, Saint Jerome, they wrote a Bible in Latin. This Bible was in Latin. Mention कर लेना इसको. I will give you a special lecture on Bible. Saint Jerome's Bible or Vulgate's Bible was in Latin Bible. During Anglo-Saxon timings, when the Christianity got spreaded, they are the first people who actually were reading the Latin Bible, right? Latin Bible के बाद rise होता है Lollards का, religious movements after Black Death and all. John Wycliffe, who was leading the religious movement Lollards, he translates Latin Bible into English. First English Bible is by Wycliffe. First English Bible is the translation done by Wycliffe. It translated Latin version, Vulgate's Latin Bible, also called Saint Jerome's Latin Bible. What was the language of original Bible? Hebrew. Vulgate ने भी translate किया. Vulgate translated Hebrew version of Bible. Vulgate की जो Latin Bible है वो original Bible जो Hebrew है, Hebrew Bible से. And there is no one writer of Bible. Remember this. जैसे आप पूछो ना सर Hebrew में कैसे लिखी थी? There is no writer. It is compilation of the sermons, compilation of the speeches by the disciple of Christ. उसमें भी दो टाइप की बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट. बिफोर क्राइस्ट, बहुत बढ़िया. ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं. ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल इज द बाइबल बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट से पहले भी बाइबल थी, जी हाँ. ये मुझे इसलिए तो ऑफलाइन पढ़ाने में मजा आता है. यहाँ कोई लेक्चर रट के नहीं आ सकता मैं. क्या पता कौन से टॉपिक पे क्या पूछा और मैं वहां से किस तरफ निकल जाऊं. एक मीम आया था ना बीच में, माफ करना मैं थोड़ा यहां वहां निकल जाता हूं. आप कोई बाइबल पूछता तो बाइबल में चल देता हूं. ऑफलाइन में पढ़ाने से मुझे भी अपना रिटेन बड़ा अच्छा हो जाता है. दैट्स द बेस्ट थिंग. कौन सी बाइबल थी? हिब्रू बाइबल. हिब्रू बाइबल में भी द फर्स्ट ट्रांसलेशन जो है दैट इज ओल्ड टेस्टामेंट. ये ओल्ड टेस्टामेंट ट्रांसलेशन है. व्हाट इफ दे आस्क यू टफ क्वेश्चन? Wycliffe's Bible is the translation of the Bible, Hebrew Bible or Latin Bible. Which testament? So first English Bible is actually translation of Old Testament. Vulgate's Latin Bible is Old Testament. Old Testament. What is Old Testament? Bishops, popes, monks before Christ, they also used to write their doctrines, their preachings. So the sermons given by the bishops before Christ, before the rise of Christianity. Because the Old Testament was more religious, more centralized towards royals. Christ is the first person, the messenger of God, or maybe the God himself. Christ said that religion is not the property of rich people or the royal class. It belongs to everyone. So the people of Old Testament bishops, they didn't like him. उन्हें वो पसंद नहीं करते थे. वो कहते थे कि भाई ये religion को बड़ा आसान बना रहे हैं. वो कहते थे only the kings have the royal blood and the God and the kings are same people, same dynasty. कहानियां भी बनती थी, फेक न्यूज आती थी. आज भी जैसे गोदी मीडिया है, उस टाइम फेक न्यूज आती थी. राजा जो है वो ज्यूज का डायरेक्ट रिश्तेदार है, मानना पड़ता था. क्वीन अथीना की सिस्टर है, मानना पड़ता था, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं. Christ made it more democratic. That if you're doing your duty, you are a good Christian. If you're honest, you don't have to go to the church and get your attendance regularly. So people didn't like him. The Old Testament, initially, kings were in support of Old Testament because Old Testament was giving more power to the king. New Testament, when Christ came, he was roaming around, meeting people in the villages, areas, and talking about this, that God is for everyone. God doesn't create any difference. God doesn't do any partiality. God doesn't care who is the king, who is the commoner. तो किसको पसंद नहीं आएगा अगर कोई आके बोले कि राजा कुछ खास नहीं होता, राजा की कोई टेंशन नहीं है? राजा को पसंद नहीं आएगा. तो वो जो ओल्ड टेस्टामेंट वाले थे वो न्यू टेस्टामेंट वालों को मरवा देते थे. क्राइस्ट भी क्रूसीफाई वगैरह इसी वजह से हुए थे, क्योंकि वहां पे जो भी राजा वगैरह था उसको लगा कि ये सब सही नहीं है, ज्यादा हो रहा है.
जिंदा जला दिया था, हाँ, विलियम टिंडेल। तो जिसने न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेट किया थोड़ी सी 50-60 साल के बाद, विलियम टिंडेल, इसको भी पढ़ेंगे हम। टिंडेल को जिंदा जला दिया था, he was immolated, विलियम टिंडेल, फॉर ट्रांसलेटिंग न्यू टेस्टामेंट। पहले लोग न्यू टेस्टामेंट इतना पसंद नहीं करते थे। न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियनिटी इज मोर लिबरल, वे लिबरल। क्रिश्चियंस में आपको बहुत ही रेयर मिलेगा इंटरकास्ट मैरिज का कोई इशू बनता हो या एनीथिंग, दे आर मोर लिबरल। आपने यूरोप में देखा होगा। तो वो इस वजह से था बिकॉज दे सिंपली बिलीव दैट जस्ट डू योर ड्यूटी टू द गॉड, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ठीक है, याद रहेगा। बोथ आर हिब्रू, Jewish language, Hebrew. How many of you know Christ was a Jew? पता नहीं पता? Why Christians and Jews are fighting? Christ himself was a Jew, a good shepherd, good Samaritan. और लोगों को लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए ही होता है, ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है दैट दो रिलीजन आपस में लड़ते हैं, रिलीजन के अंदर भी लोग लड़ रहे होते हैं। आप पुराना इतिहास उठाओ हिंदुइज्म का, आपस में लड़ते थे किस नाम पे? शैव वैष्णव, शिव के फॉलोवर, विष्णु के फॉलोवर। आप पढ़ो, ज्यादा जानकारी के लिए कमल हासन के 10 अवतार देखो। कमल हासन 10 अवतार मूवी में उसको वो पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो विष्णु को मांग रहा होता है और राजा कहता है शिव को मान। ये एक्चुअली रियलिटी है, शिव एंड वैष्णव। सेम इज इन इस्लाम या सुन्नी। फिर सिखिज्म में है, सिखिज्म में 10वें गुरु के बाद जो एक और गुरु है उनको जो मान रहे हैं, उनके आपस में इश्यूज चलते हैं क्योंकि 10वें गुरु के अकॉर्डिंग द लास्ट गुरु इज गोविंद सिंह। उसके बाद कोई गुरु हो ही नहीं सकता, वो गुरु ग्रंथ साहब ही रहेगा। बट उसके बाद कोई एक और रविदास है, कुछ ऐसा नाम है शायद, वो आ गए, कुछ उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, हु इज रियल सिख। ह्यूमन नेचर है, लड़ना ह्यूमन नेचर है, बस मुद्दे बना लेते हैं लड़ने के लिए। और अगर वो नहीं है तो कास्टिज्म है। हरिशंकर परसाई ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, हिंदुस्तान में सबसे छोटी जाति, सबसे नीची जाति अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेती है। सबको अपर कास्ट बनना है तो अपने से नीचे को ढूंढना ही पड़ेगा। और वो हर जगह, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण्स में भी 10 लोग हैं, सीनियर ब्राह्मण, जूनियर ब्राह्मण, है ना, अलग अलग किसको ज्यादा मानते हैं किसको कम मानते हैं। अपने से नीचे वाले ब्राह्मण घर में लड़की शादी नहीं करेंगे। हर जगह है, ये लड़ने के हमें रीजन चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट भी लड़ाई हो रही थी। गॉट इट? नाउ लेट्स गेट बैक टू टॉपिक पार्सन। अब पार्सन पे वापस चलते हैं। जस्ट डू जस्टिस, ये पढ़ना अच्छे से। Wycliffe and Bible पे ना I'll give you special lecture where I'll also talk about Geneva Bible, Breaches Bible, Great Bible, फिर उसके बाद किंग की ऑथेंटिक बाइबल, पूरा बाइबल पे आपको I'll give you a special lecture on बाइबल एंड डिक्शनरी पे भी। जो फर्स्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी राइटर था वो बाय नेचर चाइल्ड अब्यूजर था, पीडोफाइल बोलते ना, हाँ, वो बाय नेचर था। वो ट्राइड बेस्ट, ही यूज्ड टू फील गिल्टी बट somehow suffering from some mental disorder, वो बाय नेचर चाइल्ड अब्यूजर था। वो बाद में सुसाइड कर लिया उसने। फर्स्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी राइटर्स है। ऐसे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी आती थी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी सेपरेटेड, दोनों में लड़ाई हो गई, मरियम अलग वेबस्टर अलग। देन मरियम वेबस्टर वाज द बेस्ट सेलिंग डिक्शनरी, सेल वेंट डाउन। नेक्स्ट 4-5 years मरियम वेबस्टर दोनों बर्बाद हो गए, सेल वेंट डाउन। They both came together again became Merriam Webster, दोबारा फेमस हो गए। इंडिया में सबसे बेस्ट डिक्शनरी थी भार्गवाज। पुरानी डिक्शनरी अगर आपके मम्मी पापा को टीचर हो इंग्लिश के तो मिल जाएगी, भार्गवाज डिक्शनरी। अब तो ऑक्सफोर्ड हर जगह आ गया है, तो उसका भी पूरा अलग इतिहास है। फर्स्ट डिक्शनरी केम इन 1538, फर्स्ट लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी, वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ये सब पढ़ाऊंगा। चलो गेट बैक। पार्सन्स टेल इज अ सरमन एंड ही important thing is he deals with 7 deadly sins. First story that talks about 7 deadly sins. First story that talks about 7 deadly sins.
अमिंदर का पर्सनैलिटी बाय नेचर ग्लटनी. Out of 7 deadly sins, 1 deadly sin is gluttony. What is gluttony? Overeating. जैसे इसे स्ट्रेस ईटिंग भी बोलते हैं. नॉर्मली हमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको स्ट्रेस होता है तो भूख लगती है, स्ट्रेस ईटिंग, तो वो उसको बोलते हैं दिस इज ग्लटनी. कंट्रोल, कम खाना, गम खाना, कम खाना गम खाना. जितना कम खाओगे उतने अपने दुख को भी खा जाओगे, क्योंकि हेल्दी बॉडी रहेगी, हैप्पी बॉडी. इट इज रिटन इन योगा थिंग्स ऑल्सो that if you feel hungry and you can eat 5 chapati, eat 3 and leave for a healthy body. हमारे साथ उल्टा है, हम टीवी देखते हुए 10 भी खा सकते हैं. तो ये वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है. मोस्ट ऑफ द करप्ट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग. प्राइमरली इन क्रिश्चियनिटी there are 7 things that distract you from the path of God. So it has wrath, gussa, envy, jealousy, lust, gluttony, pride, ego, sloth, आलस्य. ये सारी चीजें यहाँ पे. So there is 7 deadly sins. 7 deadly sins appear in the story. ये याद रखना है. और इसके अलावा किसी और की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है. If I feel like telling you another tale, I'll let you know. Now let's go for some quotations related to Canterbury Tales. Do this. Leave half page or 1 page. हाफ पेज या 1 पेज छोड़ के लिखना आगे. Just leave half page or maybe 1 page. If I feel like adding something, मैं भी दोबारा जैसे चेक करता रहता हूँ. So if I want to add some facts, some new points, so you will have half page, 1 page left. It will be there. Put the title now, or maybe just write like this. There is a famous quotation by A.C. Ward. Chaucer's characters are individual Chaucer's characters are individual as well as they represent their types. Chaucer's characters are individual as well as they represent their types. Modern critic A.C. Ward. What is the greatest thing about Canterbury Tales? It is not just a story. It is not just a travelogue. Chaucer has given us first-hand reality. Chaucer tells us that what I'm saying is truth. Chaucer also tells us that you can take it as a story. He talks about characters. You will feel that he's insulting everyone. If he's talking about doctors, he's talking about all the doctors. If he's talking about nun, he's talking about all the nuns. That's what we have understood. Chaucer is making fun, attacking the bad things of society. But he's so smart that he saves himself from this accusation. अभी मैं बोलूं, एक स्टूडेंट था, वो क्लास में कुछ नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, दिन भर मोबाइल चलाता था. किसको लगेगा सर मेरी बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सभी को लगेगा, जिसने कभी भी थोड़ा बहुत फोन चलाया होगा क्लास में. लेकिन अगर मैं उसमें बोलूं कि उनमें से कुछ लोग तो सिर्फ कश्मीर से आते हैं, तो समझ जाएंगे ना कि मैं एक की बात कर रहा हूं. वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन समझ जाओगे. तो चौसर क्या करते हैं? देयर इज अ वाइफ ऑफ बाथ एंड एडल्ट्रेस है, 5 times मैरिड है, ही हैज गैप टूथ. हाउ मेनी वीमेन कैन हैव गैप टूथ? At the time, just one. So he's pointing out the characters are individual. First of all, they're individual, but they are representing their types. Chaucer is smartly attacking everyone and also saving himself by mentioning one quality which makes the character individual. Nun, prioress, fashionable nun. कोई भी हो सकता है. बहुत सारी nun fashionable थी, बहुत सारी nuns egoistic थी, show off करती थी. But how many nuns were wearing the same brooch with same locket? Individual trait. So Chaucer कह सकते हैं नहीं, I'm just talking about one. I'm not talking about you. Doctor of physics. All the doctors is talking corrupt. But उनमें से एक डॉक्टर को तो गोल्ड चाहिए था. So smart people understand. अच्छा गोल्ड वाले की बात हो रही है. He's attacking summoners, but then also says that summoner loved garlic in special and his face was like that. वो जानबूझ के individual types बता रहा है.
He's giving us individual ideas so that the smart reader will understand he's talking about his society, and he's also understanding that Chaucer is keeping himself away from any accusation. क्योंकि religious लोगों को target करना is not that easy. विलियम टिंडल के साथ क्या हुआ था, थॉमस मोर के साथ भी ये होगा, जो फर्स्ट डेमोक्रेसी की बात करेगा. तो पॉइंट इज his characters are individual, but then he gives us something which have types. यानी सबकी बात भी कर रहा है और एक की बात भी कर रहा है, कोई ना कोई उनकी पर्सनल आइडेंटिटी दे रहा है. क्लियर है? नाउ स्पेंसर हैज कॉल्ड हिम द वेल ऑफ इंग्लिश. Spencer called him, Edmund Spencer, the first great poet. Edmund Spencer, the well of English, undefiled. Chaucer is the well of English undefiled, जिसमें कोई pollution नहीं है. Technically first English writer, first proper English writer, first proper English writer. याद रहेगा? Any questions related to this? आर्नोल्ड, गुड क्वेश्चन. देखो एक चीज है ना, आप जैसे भी हो, इजी एग्जांपल क्या है? इजी एग्जांपल ये है कि आप जैसे भी हो, आपको जज करने वाले लोग बदल सकते हैं. यू आर सेम, बट पीपल हु जज यू, दे आर डिफरेंट. दे जज यू ऑन देयर ग्राउंड्स. नॉर्मली जब मैं एक वीडियो बनाता हूं, उसमें 90% स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, फिर एक आगे लिखता है यार तुम बार बार क्यों बोलते हो, तुम 10 बार नेट हो. उसको सिर्फ ये दिखता है, उसको बाकी वीडियो नहीं दिखते. फिर एक लिखता है आप तो बहुत ईगोइस्टिक हो. फिर एक लिखता है इतना शो ऑफ. एक दिन मैंने गाड़ी वाली वीडियो डाल दी थी, क्या करूँ फिर मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिर्फ महात्मा गांधी वाले कोट डालूं? मेरी पर्सनल लाइफ है यार, ये तो अच्छी बॉडी नहीं है, मैं मसल भी डाल रहा होता. तुम तो शो ऑफ कर रहे हो. अब मैं उस शो ऑफ वाले के हिसाब से बिहेव करूं, या अच्छे वाला जो सोच रहा है उसके हिसाब से बिहेव करूं, या जस्ट दोनों को इग्नोर करूं? मैंने इतना सीखा है. कोई कहता ना यू आर गॉड ऑफ इंग्लिश, तुम्हें तो कुछ नहीं आता. हाँ हाँ थैंक यू. चॉसर ने अपना काम किया. व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ चॉसर? 1340 to 1400. टाइमिंग ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड 1822 से स्टार्ट हो जाएगा, 1828 से. अब 1828 में कौन क्या बोल रहा है? दैट इज नॉट चॉसर्स क्रिटिसिज्म, it is his opinion. So he says, मैं इसको define करूंगा, I'll make you understand. Arnold said, the greatest Victorian writer and also a classical critic, he said Chaucer lacks high seriousness. But who brought this idea of high seriousness? Arnold himself. तो अपने ग्राउंड पे कुछ भी बोल सकता है. आज मैं यहां बैठ के राज कपूर को क्रिटिसाइज करूं, तो टेक्निकली इट इज नॉट क्रिटिसिज्म of Chaucer, it is his opinion. अब opinion क्या है? That I tell you. Arnold belongs to classical criticism. What is classical criticism? People, Plato and Aristotle, those who came with the idea that poets are gods and only the poet can reform the society, poet should tell the truth. He comes from this kind of life, this background. According to Arnold, who is a writer? The writer is God-gifted person. If you're a God-gifted person and God has appointed you to reform the society, then you should be serious with your content. Chaucer क्या कर रहा है Canterbury Tales में? What is Chaucer doing in Canterbury Tales? Reforming the society by attacking the corrupt religious people, attacking the corrupt businessmen, attacking characterless women. Chaucer is also trying to refine the society. But can we say Chaucer was damn serious or Chaucer was making fun? Mock style? Canterbury Tales is mock style. This is what Arnold says. It doesn't have the high seriousness thing. Chaucer's style is mocking at society.
वो देखो अल्टीमेटली दूसरे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. लियो टॉल्स्टॉय वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर. We have seen Shakespearean fans. People die for Shakespeare. Tolstoy was greatest critic. टॉल्स्टॉय शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करता था. अब तीसरा क्रिटिक आया जॉर्ज ऑरवेल. ऑरवेल ने आके लिखा लियर, टॉल्स्टॉय एंड अदर फूल्स. उसने टॉल्स्टॉय को फूल साबित कर दिया. तुम क्या करोगे, तुम्हें पता ही नहीं शेक्सपियर कौन है. शेक्सपियर हैज फैंस, शेक्सपियर हैज क्रिटिक्स. It doesn't matter who comes with his opinion, but for exam purposes, for knowledge purposes, we have to understand Arnold is a good man. He's not against Chaucer. There is no personal rivalry, enmity. He simply says that if God has appointed you with the blessings of a bard, bard is a poet, do the work seriously. जैसे अगर मुझे किसी को नेट के लिए मोटिवेट करना है, यार छोड़ो ना, रियलिटी बताता हूँ. रियलिटी जिंदगी में इतने एग्जाम्पल्स हैं कि अब घर में एग्जाम्पल मिल जाते हैं. एग्जाम से पहले एक लड़के का मैसेज आया रात को 9 बजे के आसपास. कुछ मेरे भी 5-7 साल पुराने वाले दिन थे. टीचर बन गया था लेकिन शायद वो वाली मैच्योरिटी नहीं आई थी, एक्सपीरियंस नहीं आया था. तो आई गॉट अ टेक्स्ट मैसेज बाय 9 o'clock. नेक्स्ट डे इट वाज नेट एग्जाम. द क्वेश्चन वाज, सर मैं अब क्या पढूं. मैंने लिखा हनुमान चालीसा. नहीं नेचुरल मैंने ये लिखा. मैं मजाक, मैं भी बॉयज वाली एज में था. फिर अभी थोड़ा मैच्योरिटी आ गई है, गालियां खा खा के समझ में आ गया कि आपका हर स्टेटमेंट लोगों के लिए बड़ी बात है. पहले नहीं फर्क पड़ता था. टुमारो मॉर्निंग यू हैव एन एग्जाम 9 o'clock. जस्ट 12 hours बिफोर यू आर टेक्सटिंग मी व्हाट कैन आई रीड इन लास्ट मोमेंट. मैं किसी और मूड में हंसी मजाक में था. मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़, अब क्या पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे. तो मैंने उसका करियर खराब करने की तो नहीं कुछ सोचा. वो उसने भाई ने स्क्रीनशॉट फेसबुक डाले, लुक एट दिस मैन, ही इज नॉट सीरियस एट ऑल, दिस इज हाउ ही इज रिस्पोंडिंग, आई जस्ट आस्क्ड हिम टू हेल्प मी. अरे यार अगर मैं तुझे लास्ट मोमेंट बोलूंगा ना डेविड डचेस रिवाइज कर ले, सो वो फेल हो जाएगा. एनी टीचर हु अंडरस्टैंड द एग्जाम प्रेशर विल टेल यू दैट लास्ट मोमेंट बी रिलैक्स्ड. क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया तो भी लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे, और बहुत कुछ कर रखा है तो लास्ट में प्रेशर मत लो. बट मैंने सिंपली सार्केस्टिक लिखा, मॉक स्टाइल, हनुमान चालीसा पढ़. अंतिम समय में भगवान को याद करना, अल्लाह को याद करना गलत है क्या? आप लोग नहीं करोगे क्या एग्जाम में जाने से पहले? करोगे ना. तो मैंने वही तो बोला. और ये तो नहीं सोच रहा कि टीचर मेरा गुरु है, मार्गदर्शक है. उसने अपने पॉइंट देखा. पॉइंट इज he couldn't bear up my mock style. Chaucer is also reforming, but Chaucer is using mock style. To talk about corruption of church, you don't have to tell that somebody has nasal voice. या वुमेन की बात करें तो some you don't have to describe कि उसके दांत कैसे हैं, कान है, आवाज आती है नहीं आती है, किसका फेस कैसा है. But Chaucer does that. Arnold says you are a religious person. God has made you the bard. You must be serious, damn serious. He's saying high seriousness. और मजेदार बात यह है कि आर्नोल्ड बोलता है शेक्सपियर भी हाई सीरियस नहीं है. Not even a single book by William Shakespeare gives you a moral message directly. Give me an example. किसी भी किताब में शेक्सपियर की मॉरल मैसेज मिला लास्ट में आपको? क्या मैसेज है उसमें? तो और भी नहीं है कुछ, कुछ मैसेज नहीं है उसमें. तो कौन फॉरगिव कर रहा है? वो सिंगल लाइन मैसेज नहीं. वो देखो ऐसे तो मैसेजेस उसमें कोटेशंस हैं. दिस इज व्हाट दैट कम्स इन डिफेंस. आपने जो बोला है गुड पॉइंट. पीपल कम इन डिफेंस दैट शेक्सपियर के जो फूल्स हैं, they are constantly giving you messages that be like that, be like that. But there is a direct message, overall direct message. Chaucer कितनी बार Shakespeare, how many times Shakespeare attacks society to reform it? Shakespeare was not a direct reformer. So for Arnold, Shakespeare is also not a great writer. Oh, Shakespeare again is not giving direct message. John Keats was not revolutionary at all. No direct reformation, nothing. Kelly would fight for change. They have been criticized. But it totally depends on the person, the critic. Arnold was a serious writer, following the classical pattern. Arnold का definition था, poetry is criticism of life. Poetry is criticism of life. Definition by Arnold.
under the laws of poetic beauty and poetic truth. Under the laws of poetic beauty and poetic truth. Poetry is criticism of life under the laws of poetic beauty and poetic truth. Definition of poetry by Matthew Arnold. This is the part of criticism. Poetry is criticism of life. So criticism is not that blind criticism, just attacking someone. Criticism of life means the demerits, the vices of life. क्रिटिक्स की ओपिनियन है, वो अपनी ओपिनियन पे जज करते हैं. जैसे जॉन डन है. जॉन डन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल राइटर. आई विल टीच यू जॉन डन, यू विल फॉल इन लव विद जॉन डन. जॉन डन को जो पढ़ेगा ना, आपको लगेगा ये होती है पोइट्री, लेकिन उसको किसी ने इज्जत नहीं दी. जॉन डन was seriously ignored by his own contemporaries. Then one writer tried to praise them, Samuel Johnson. But after Samuel Johnson, John Donne again got ignored. Then in 1921, T.S. Eliot wrote The Metaphysical Poets. And from that 1921 article, the metaphysicals became relevant. Now if you read, people will say, wow, Andrew Marvell, Coy Mistress, what a great work. तो डिपेंड करता है रीडरशिप पे, पढ़ने वाला कौन है, कमेंट्स करने वाला कौन है. आर्नोल्ड का देखो क्या आइडिया है. Poetry is criticism of life. First of all, find out the vices of society and criticize. But when you criticize the life or the vices, follow the laws, rules of poetic beauty, means literary devices, rhymings. Your poetry should be beautiful. And poetic truth, and tell the truth, but in serious way. मुझे किसी को नेट के लिए गाइड करना है तो मैं हंसते हंसते थोड़ी गाइड करूंगा. जब आप लोग फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आते हो, कई बार मैं अलाउड नहीं वैसे मिलने के लिए स्टूडेंट से बिफोर एडमिशन एंड ऑल, बट मान लो कई बार मिल जाते हैं, कई बार सामने खड़े होते बात करते हैं. अब आप हो, साथ में मम्मी पापा हैं, और एक ऐसा माहौल है जहाँ पे इमोशनल हो आप. बच्चा दूर जा रहा है घर से पढ़ते हुए. व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मैं से हंस रहा हूँ, अच्छा तू भी आए पढ़ने? हाँ हाँ हाँ, अरे अरे सर हो जाएगा सर, अरे सर हो जाएगा. बहुत लोग बैठते हैं, सर सर पक्का हो जाएगा. तो नहीं भी होता सर, पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मुझे कैसे पता. अब मैं ऐसे बोलूं, यस सर, नहीं नहीं सर, यस सर, जी सर, ट्रस्ट मी सर, हाँ जी सर, बस मेहनत करना. कौन सा वाला आंसर चाहिए? अगर मैं पहले हंसने वाला आंसर दूं, आप ऐसे बहुत लोग बोलते हैं सर मैं पास हो जाऊंगा. कोचिंग सेंटर्स गारंटी दे देते हैं, देना नहीं चाहिए वैसे, चीटिंग है वो. आप पास हो जाओगे मैं कैसे जानता हूं यार, मुझे नहीं पता. मैं इतना जानता हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा पेपर में आएगा. यू आर इन फ्रंट ऑफ मी फॉर 3 hours. 20 hours, what you do, it's not my concern. You are not even in elementary schools. I can call your parents. आपका बच्चा पढ़ता नहीं है. I can't do that. मैं नहीं कर सकता. तो 20 घंटे तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, तो how can I take guarantee? But then it is not what you expect from a teacher. You expect नहीं, definitely, sure. और मैं अपने डिफेंस में बोलता हूँ, बस मेहनत करना. High seriousness, mock style. किसी को मोटिवेशन देते मैं हंसता रहूंगा ना, अच्छा तू भी एग्जाम में जाएगा, पता नहीं एग्जाम में बेटा, बड़े ना वहाँ पे एग्जाम में, हाँ डब्बा गोल हो जाता है. तो मॉक स्टाइल नोबडी वांट्स. होप यू अंडरस्टूड. Serious talk, serious style. Arnold believed in this thing that poets are not for entertainment. Plato believed in this thing that poets just should instruct. एक ही काम करना है. The job of poetry is to instruct. Instructions though, knowledge though. Aristotle said instruction is fine, but some enlightenment is necessary. अगर पोइट्री में enlightenment नहीं है, तो why people will go for poetry? Then they will read prose only. So poetry should have some enlightenment, but not jokes. इन्होंने नहीं बोला satires करना, allegories बनाना, jokes बनाना. They go and catch a falling star में जॉन डन joke बनाता है. They said be serious. So remember this point. जैसे उनकी वजह से एक आपको बहुत अच्छे point मिल गए. Classical literature is serious. Remember this. Classical criticism, classical literature, it's serious. Whether it's Plato, Aristotle, Horace, Dryden, Pope, Arnold, Eliot, they're all serious.
The writers of classical criticism, Plato, Aristotle, Horace. If you want to write, I can make you write. Horace है कपिल सर, उनको थैंक यू बोल के बाहर जो है. Horace, उसके बाद जो इंग्लिश क्रिटिक्स है क्लासिकल्स, ड्राइडन, नहीं टेनिसन नहीं, पोप, आर्नोल्ड, इलियट, दे आर सीरियस राइटर्स. एडवर्ड साइड इज अ क्रिटिक, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक. ये क्रिटिसिज्म के पार्ट नहीं है. टेनिसन इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. टेनिसन को अगर आपको किसी ने कुछ पढ़ाया होगा तो किसी प्रेफेस में कुछ होगा. ही इज नॉट द डायरेक्ट क्रिटिक. क्लियर? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट? क्लासिकल्स टीएस इलियट के साथ खत्म होता है. टीएस इलियट इज द लास्ट राइटर ऑफ क्रिटिसिज्म. टीएस इलियट इज ऑल्सो अ ब्रिज बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी. टीएस इलियट comes in criticism, टीएस इलियट comes in literary theory. टीएस इलियट न्यू क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है, थ्योरी का भी पार्ट है. आपका कैंटरबरी टेल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. I'll check if I have to make you write some random points. Any questions? No questions? नेक्स्ट क्लास कल है. कल आपका कल है ना? कल क्या है? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट. सॉरी. मंडे को आपका कैंटरबरी टेल्स के साथ इंक्लूडिंग एज ऑफ चॉसर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट with some 4-5 writers. Gower has 3 books. Langland has a book where we have to write down 10 to 15 things. Visions हैं, passes हैं, Good Samaritan concept है. इसके बाद Henryson is a very small writer. Occleve is a very small writer. Dunbar is a small writer. So Monday आपका age of Chaucer खत्म हो जाएगा. Then we have a small age, dark age. Most probably it will be finished in a single class. I will try to finish it in a single class. It has only 6 to 7 writers. In those 6 to 7 writers, only 2 writers are important. Rest, formality purposes, we have to write down the names. Those 2 writers, and then we will discuss introduction of Elizabethan. So most probably Wednesday से आपका Elizabethan start हो जाएगा. अगर Monday ये खत्म हुआ कैंटरबरी, Tuesday डार्क एज खत्म होगी, एक सिंगल डे क्लास, 2 घंटे 2.5 घंटे बहुत होते हैं. Wednesday Elizabethan start हो जाएगा. हाँ, the real literature will start there. Edmund Spencer will take maybe 2 classes. उससे पहले डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, पोइट्स अलग, अर्ली ड्रामा, फिर ड्रामा साइकिल्स आएंगे. कॉन कौन से थे? वेकफील्ड, चेस्टर, कोवेंट्री, यॉर्क. देन यूनिवर्सिटी विट्स विल टेक एटलीस्ट 1 कंप्लीट क्लास. देन विलियम शेक्सपियर. 10 दिन चलेगा आपका एलिजाबेथन अराउंड. फेयर मत करो. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सॉरी, मैं बात करना भूल गया था. Those who are writing the notes here and then you go back and you write down in a fair copy, my suggestion is write in the class only. Do a smart work, because if you go home and you rewrite those things again, it's a vast syllabus. Your notes will never be finished. यहाँ भी लिखोगे, वहाँ भी लिखोगे और कभी खत्म नहीं होंगे. Notes कभी खत्म नहीं होंगे, नहीं बना पाओगे. I've seen many of you go back and write in a very good writing, red pen, black pen, underlinings. हमारी एक स्टूडेंट थी वो लास्ट बैच में, उनको मैं कहता था मत लिखो मैम, बट शी सेड मुझे लिख के याद होता है. So she used to write a lot, but writing a lot will consume a lot of time. So the smart thing is write in class. If you miss something, leave 1 line. एक लाइन मिस हो गया, छोड़ दो, आपस में देख के चेक कर लो. Ask me again. Missed 1 concept, leave 4-5 lines. You feel that, and I tell you this is very important, read at home. Leave 5 lines. Go read at home, add on there only. Write clean, neat and clean so that you can read and revise. Because we need memory. So better you do the smart writing here. Write, leave the gap, write, leave the gap, go back, read something, add new points, but in the same copy. It will save your time. Okay? And those who are writing notes, by taking some screen and penning down those lines. कई लोग ऐसे भी हैं. वो मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत प्यारा स्टूडेंट था. वो उसने विकीपीडिया एज इट इज उतार दिया था. गांव से था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था. वो गया और नोट्स बना के एज इट इज विकीपीडिया उतार रहा है. इफ इट इज ऑन द स्क्रीन, व्हाई आर यू राइटिंग इट ऑन द पेज? नो, दैट्स नॉट नोट्स मेकिंग, इट्स जस्ट कॉपीइंग इट. Notes making, read it, understand it, then summarize those things in 3-4 lines.
मेक दोस 3-4 लाइन्स ऑन योर ओन, देन राइट इट. देख देख के मत लिखो, वो तो कॉपी कर रहे हो आप. कहानी पढ़ लो, सिंपल सा लिख लो. हीरो हैमलेट, beloved Ophelia, father this, main villain this, he does this, famous quotation this and this. बाकी हमारे यहाँ से जो मिलेगा मिलेगा, but still my suggestion, do not go for wrong notes making. किसमें प्राइड, क्योंकि इसको वो मोटिवेट करता है, उकसाता है. तो जो इसका जो रूस्टर का पॉइंट है, he is kind of, you know, he wants lot of name, fame, praise. So he is technically seduced because he praises him. वही है, प्राइड वगैरह से बच के रहना. These are interpretations. आप कुछ भी लगा दो, ये तो प्लस पॉइंट है हमारा. Literary interpretation is not based on some rules and regulations. If you know certain things, just relate. अगर आपको कोई दूसरी बुक की कहानी याद है, बोल दो सर ये ऐसे ऐसे सेम कहानी मैच होता है. Done. Philip Larkin. I gave you a reference once I was talking about. The name of the poetry is Church Going. Very important work. Multiple questions in exam. उस दिन शायद आपने नाम नहीं लिखा था, लिख लो. Philip Larkin. Yeah, famous writer, Philip Larkin. Very important writer. Church Going. He says this is the age of modernization. People don't believe in religion. Day by day, the number of people who are visiting church, it's decreasing. The church walls, they are getting darkened. There are cobwebs. People don't take church seriously. And I wonder who will be the last. एक दिन ऐसा होगा कि चर्च में सिर्फ एक लास्ट आदमी आएगा, चर्च में आना बंद हो जाएगा. मैसेज ये है that we are forgetting our religion, our cultural roots, and we are moving towards a different kind of modernity. ये मैसेज है. That's what T.S. Eliot says in Wasteland. हमारे cultural roots, religious roots, human roots खत्म हो गए हैं. We are becoming more like machines. और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है. वो बताता है ना कि if you are chaste you go to God, heaven. और कोई आंसर नहीं है इसका. जितने भी रिलीजन्स में लॉयल्टीज या जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू हेवन. यू डू बैड, यू गो टू हेल. यू डू गुड, यू गो टू हेवन. व्हाट डू यू गेट टू नो? यू आर जस्ट अ लैब एक्सपेरिमेंट. कभी अगर साबित हो जाए तो कि हम सिर्फ और सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट है. एडम एंड ईव वर द फर्स्ट पीपल क्रिएटेड बाय गॉड. गॉड इज जस्ट अ साइंटिस्ट. देन This is the reason. One of the greatest writer, I think Voltaire said, no, because Friedrich Nietzsche said God is dead. There is a philosophy, God is dead. So he came with an answer that if God is dead, we must invent the God. This is also the defense against existential crisis. This is called leap of faith, a theory by Husserl Proud. Leap of faith. अगर आप डूब रहे हो पानी में अकेले और आपको दिख रहा है कोई भी नहीं है, तो भी यू हैव दैट होप, गॉड इज देयर. हमने पढ़ा भी है, माना भी है, वी ट्रस्ट, वी बिलीव, तक कोई तो बचाएगा. एंड हु इज दैट? गॉड. द डे यू विल एक्चुअली बिलीव इन दिस, दैट देयर इज नो गॉड, अ कंप्लीट अनार्की, इट विल जस्ट कंज्यूम अस ऑल. वी आर स्टिल द पार्ट ऑफ अनार्की. दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट अनार्की. ये हमारी जो अनार्की है, अराजकता है, ये इंटेलिजेंट अनार्की है. हम समाज में रह रहे हैं विद नो ट्रूथ. कहाँ से आए नहीं पता, कहाँ जाएंगे वो भी नहीं पता, फिर भी रह रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं. रेस है करियर की, नौकरी की. द थ्योरी सेज वी आर एलियन कास्टेड इन एन एलियन यूनिवर्स विद नो इनहेरेंट ट्रूथ एट ऑल. ट्रूथ इज रिलेटिव. किसी का अपना सच होता है, मोमेंट्स के हिसाब से होता है. हम ईमानदार है ना, अभी सामने 10 का नोट पड़ा नहीं उठाएंगे, 20 का पड़ा है तो नहीं उठाएंगे, 100 का नहीं उठाएंगे, 1000 का, 2000 का. चेक पड़ाओ कैश के साथ, कैश कराओ, कब तक नहीं उठाओगे? मैं जब आर्मी इंटरव्यू देने गया था ना, तो कर्नल साहब थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा था, एसएसबी इंटरव्यूज, उसमें एक 1-on-1 सेशन होता है. सर विनीत, यू फाइंड 1000 रुपी नोट, व्हाट विल डू? विनीत तो ऑनेस्ट है,
इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू ऑनेस्ट होते हम. So sir, that does not belong to me. You mean you cannot use the opportunity? You go to the battlefield and there is a bloody damn opportunity in front of you. You will become loyal and honest, get your soldiers killed. No sir, उठा लूंगा sir. You have no character, Vineet. फिर पूछ रहा है, so what will you do now? Sir, depends. देखेंगे सर. क्योंकि अगर आपने नहीं उठाया इसका मतलब आपको मौके का फायदा नहीं उठाना आता, अपॉर्चुनिटी नहीं आती. आप डिफेंस में जा रहे हो, कल को सामने वाले सोल्जर ने बाई चांस अपने वेपन्स ड्रॉप कर दिया तो उसको गोली नहीं मारोगे ना. हाँ, बात तो सही है सर. आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी. ट्रूथ इज रिलेटिव. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे एग्जिस्ट व्हेन देयर इज सम एक्शन रिएक्शन थिंग, रेसिप्रोकेशन. एनीवे, और क्वेश्चंस? You don't want to be happy? You don't want me to be happy? Isabella, you're so good student. Why do you want me to have excitement in my life? You're asking me about current situation of India, religion and politics. And if I speak, I don't want to be a person to hurt the sentiments. इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सेंटिमेंट डिपार्टमेंट. बहुत जल्दी लोग हर्ट हो जाते हैं. You all are having broad mind. Okay, class of